Only few weeks are left on it, and this is the time when a small mistake can cost you big. Yes, you heard it right. My name is Niharika, and today I'm gonna share with you 10 mistakes that I did in my final month of preparation. This gonna be the real, honest talk, no sugarcoating. Even though I didn't crack it, but I remember all those mistakes I did in my final month of preparation. Those mistakes I wish someone warned me about, and today I'm gonna warn you about those mistakes. So please listen carefully and do not repeat all this. Number one mistakes I did, starting something new. This is not the time to pick up something new, some new strategy, new book or new chapter. You should stick to whatever you have studied before, and starting something new will just increase your confusion, stress, not your confidence. Remember that. The second mistake I did, actually it is very foolish, I know, but yes, I did it. I started to manifest rather than studying. I I started believe to that tarot lady what she said, that if I'm gonna become a doctor or not. I forgot everything, that this not gonna happen if I don't work hard, if I don't study. That was the biggest mistake I did. Third mistakes that I did was skipping my mock test. Let me revise it more. I will take my mock test later. No, you shouldn't do like that. Start taking full length mock test from now on, in the exact time slot as the need exam, and get into the exam zone physically and mentally. Fourth mistakes I did, not analyzing my mock tests. Spend at least 2 to 3 hours to learn your mistakes, to understand your patterns and analyze your errors. If you are not doing this, that's a huge loss for you. Fifth mistakes I did, neglecting my mental health. देखो देखो इस टाइम पे ऐसा होता है कि तुमको बात करने का मन नहीं होता है किसी से। यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टडी। ऐसा होता है तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो, पढ़ने बैठते हो तो भी कुछ भी ख्याल आ जाता है। बट प्लीज गो, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो अपने फीलिंग्स। डू दैट। एंड यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्राई मेडिटेशन, इट विल हेल्प टू make peaceful your mind. Try meditation. Sixth mistake I did was irregular sleep schedule. If you are sleeping at 2 a.m., waking up at 10 a.m., then your body will remain tired entire the exam time or even during the preparation time. But and it will becoming like a habit, you know. At the time of exam you will regret it. I am telling you. मेरा कुछ टाइम नहीं था, मैं कभी भी सो जाती थी, जब मन होता है पढ़ने का तो उठ जाती थी, ऐसा होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड स्लीप 8 to 9 hours ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एंड तब ऐसा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा याद भी रहने लगता है चीज़ें। तुम भटकते नहीं, मतलब पढ़ते रहते हो, तुमको नींद आ जाता है, ऐसा नहीं होता। यू शुड फॉलो अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, फिक्स योर रूटीन नाउ, स्लीप अर्ली, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोंट टेक नैप इन द आफ्टरनून बिकॉज़ at that time you will be giving your exam, you know. 7 mistakes I did was like I was comparing myself to others. ऑफ कोर्स आपका भी ऐसा होता होगा कि आपने ऑनलाइन किसी को देख लिया कि वो 15 घंटा पढ़ रहा है, 14 घंटा पढ़ रहा है, और यहाँ आप 10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, और इट विल मेस अप योर हेड, आई नो। दिस इज योर रेस, रिमेंबर दैट, फोकस ऑन योर ट्रैक। दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं, डोंट डू दैट। अपने ऊपर फोकस करो, और रिमेंबर योर कंपटीटर इज ओनली यू, नॉट अदर्स। Each mistake that I did was not revising enough, and ये तो सबसे ज्यादा बड़ा गलती है, आई नो। ऐसा होता है ना, आप पढ़ते रहते हो, फिर ऐसा लगने लग जाता है कि होगा, इसी से हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ता है। और ऐसा होता है, एक लाइन पढ़ लिया, नहीं मुझे याद हो गया, बाद में आप वही लाइन भूल जाते हो, ऐसा सबका होता है। One time revision is not enough. This month should be the revision month, you know. Whatever you studied, again repeat it. Go through your short notes, flashcards, and NCERT multiple times. Nine mistakes I did in my preparation was overthinking my silly mistakes. ऐसा होता है ना, आप छोटी सी बात, बहुत छोटी सी आपने गलती की और आप वही सोचते रहते हो कि क्या होगा मेरा एग्जाम में, मैं इतना छोटा छोटा बात पे गलती कर देती हूँ, ऐसा होता है। Made a silly mistake in mock test. Don't spiral. Understand it, why it is happening again, and try to learn from it. This exam is about learning and adapting fast. Tenth mistakes I did was not trusting myself. बोलते हैं ना, पसंद नहीं आई एंडिंग तो बदल दो। यस, बदल दो, ये तुम्हारी कहानी है, तुम खुद लिख सकते हो इसे। ये लास्ट मंथ है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। दैट्स रियली अनफेयर टू यू इफ यू आर नॉट बिलीविंग in yourself. Remind yourself that I have worked hard, I will do it. I didn't crack NEET, but I know one thing, that if I worked on these mistakes, my journey might have looked different, I know. And you still have time. Focus on yourself. Be smart, be calm, and keep showing up for yourself. If this video helped you even a little bit, then hit the like button and comment below which mistakes you can relate more. Don't forget to subscribe for more honest, real, and helpful content from someone who have been through all this. Thank you for watching. Bye bye.